हे गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू चेंज दिस चेन पॉकेट। तो जैसे आपको दिख रहा है, ये चेन पॉकेट में ये जो दांत है ये बहुत पॉइंटेड हो चुके हैं एंड इसका चेन भी देखो कितना लूज़ है और ये मैक्सिमम है। इसकी वजह से मैं ये चेंज करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पल्सर 220F के चेन पॉकेट को कैसे चेंज करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने ये खोल दिया हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप है, ये जो इस पे ये पार्ट है इसको हम स्ट्रेटन करने वाले हैं। जैसे कि ये इसको हम स्ट्रेटन करके फिर बाद में ये नट खोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग को ये भी चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग को लगेगा 8 नंबर का टिप आना। तो गाइज़, अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो गाइज़, ये जो कवर है इसको आप पेट्रोल से एक बार पोंछ लोगे तो और अच्छा रहेगा। मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ। फाइनली गाइस, जैसे आपका ये साफ़ करके हो गया है तो आप ये लगा सकते हो। और ये हमेशा एक स्टेप आगे रहेगा ताकि फिर बाद में ये लॉक हो सकता है नट।
सो गाइस फाइनली मैंने ये चेन पॉकेट चेंज किया हो। हमेशा याद रखिए कि चेन में इतना प्ले रहना कंपलसरी है, ज़्यादा टाइट भी सेफ़ नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी अच्छा नहीं है। तो अभी मैं ये कवर डाल देता हूँ। So guys, this is how you change a chain pocket. Before you end with your job, make sure you have tightened this nut and make sure that these nuts are properly tightened. ये पल्सर 220F का चेन पॉकेट था, इसका प्राइस मेरे को पड़ा 1557, जो इसका एक्चुअल MRP है. So guys, this is it for the video. Thank you for watching the video. Please do like, comment, subscribe and share for more exciting videos. See you next time.